Hello, am I audible? So, hey guys, welcome back to Codecules. Today we are a little late, but we are present. And today we will be solving the remaining medium string problems from Striber's sheet. And we'll also try to finish all the problems and start link the list to it itself. Let me start the stream on my phone. And quickly we will start solving the problems. Just a minute. Just let me set up my phone. Let me start the stream on my phone. And quickly we will start solving the problem. Just a minute. Am I audible clearly? Anyone of you can comment if anyone is watching. So, hey guys, if you are new here, my name is Harshit and I'm a final year BTech undergrad preparing for my placements. I myself was struggling with consistency and discipline. So, I started this series, took a challenge to solve the 455 DSA problems in Striver's SDE sheet. Sorry, not SDE, it is A2Z sheet. So I took that challenge and it's already been through 23 days till now. And we are consistent since last 24 days. There was only one day that we had to skip, but we are not going to skip any day anymore. And yesterday we had done 30 basic problems of strings to build a habit of solving string problems and learn some methods that are used frequently in strings. So let's just revise those problems quickly that we had solved yesterday. And then we will jump on to the remaining problems that we have to solve. Okay. So I hope it is visible. Uh, Guys, is my VS Code visible? I hope it is visible. And yesterday we had created this list of very basic problems to get a hang out of strings. Okay. So this is the context. This is a step-by-step progression of 30 problems designed to build your Java string manipulation skills from absolute basic to algorithmic challenges. So if you are new here and you have not watched my yesterday's live stream, you can go through yesterday's live stream where we had solved these 30 problems in just around 2 hours. Okay. And even I was not able to solve these problems before yesterday. So I learned all the methods used in strings yesterday only. And we are building upon that. And today we will be solving medium string problems in Stagger's A to Z sheet. Okay. So let's quickly revise. As you all might know, whoever has studied strings already in Java. So to find the length of a string, we use the length method, something like that as dot length. Okay. And the only difference in this and length of array is that we don't use uh, sorry, these brackets in array. Okay. We only write as dot length in arrays. And then access nth character to access any character in a string, we use character at method. Simply as dot character at will return. Let's say this is index. Index can be anything between the length of the string. Okay. So it will return the character at that particular index. Okay. And the third method is print all characters. To print all the characters in a string, we use these two methods, the length, and then we will loop till the size of the string
and print all the characters from the first index to the last index. Okay. And the fourth problem was exact match. We need to compare the value inside the string. We use this dot equals method. And to ignore the case, like the lowercase and the uppercase, we use this method equals ignore case. And then lexicographical comparison. This is the most important comparison method that we should remember. If we want to compare two strings lexicographically, lexicographical का मतलब होता है कि which string will come first in the dictionary. Okay. So to check which string is greater according to the position at which it comes in dictionary, we use compare to method. Okay. Find the first substring, we use index of, and we insert a string inside this substring. So that is like s dot index of any substring like space or anything. Okay. So this is it for substring. Checking for substring presence dot contains, we use string dot contains for checking the presence of a substring. And then to extract a prefix, we use the substring method and giving index inside the substring method from which we need to return the string. And there are other methods as well, like starting index and the ending index. So it will return the substring from the starting index to the ending index. And then to convert lowercase, we use to lowercase method. To trim white spaces, we use dot trim. This is used for removing the leading and the trailing white spaces. Okay. And character replacement, if we want to replace any character in a string, we use dot replace. Okay. We had solved all of these problems yesterday. So string to character array, to convert a string to a character array, we use this method to character array. Okay. Splitting a sentence to, okay, so to convert a sentence, like a sentence consists of multiple words, to convert the string of sentence into a array of words string, so we use split. Okay. And we can also add like regular expression inside it to like check how we want to split the array. Okay. And then string builder problems, how to use a string builder. String builder is mutable in Java. As you know that strings are immutable in Java. That means a object once created cannot be changed or updated. Okay. So we use a string builder to like to update the same object. Okay. So once we created a string and we want to add some character to it, we use string builder dot append. Like that means this is the name of the variable that we will create, not variable, the object we will create. Okay. And we can easily reverse the string using string builder. We just need to write the name of the string builder object that we have created and dot reverse, and so uh, it will reverse itself. Okay. It is like a built-in method to reverse the strings. Okay. Insert into a string, we can insert any character at any index of a string. This is also easier in string builder. Delete from a string, if we want to delete a character from a string, that we can also do. Palindrome check, we can easily check palindrome by using string builder. That like we can reverse the string first using string builder and then compare it with the original string by converting it to a string. Okay. And then character analysis, we have to check anagram check. Anagram, what is anagram? Anagram means that two strings uses the same number of character and to make multiple different sentences. I hope I am right. मैं भूल कैसे गया? Anagram वही होता है ना जिसमें like दो words contains same characters. Let me confirm.
ओके इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और अ फ्रेज। हाँ, जैसा मैं कह रहा था कि सही था। सो एनाग्राम मीन्स दैट if two words contains the same character set, okay, but at different position. So we have to check that. So we use arrays dot short. First, we will convert the string into character array, right? Let me also show you the code that we had written yesterday. So the basic problems were here, and let me show you here that we had solved yesterday. So this is the program, and we had started from okay, so from problem number 14, let's continue. To like string to character array, we use this method dot to character array. We had created a string input, like taken input from the user and stored it in a string variable named input1. So we had converted this input1 to character array and stored it in the character array ch. Okay. And then to print each character of the character array, we used for loop. Okay. Then the next problem was reverse a string using string builder. We created a string builder object SB and stored the input uh, provided by the user in this object SB string builder. And then we used dot reverse to reverse the string using string builder. It is really very easy. And the other method was to split. Okay. It was problem number 16. Okay. Problem number 16. To use split is used for like dividing a string into different parts. Okay. So we use string builder to store the result, and we like added each word of the string into the result string and then printed the string builder object. Okay. Then the reverse object I have already explained. Insert into a string is also explained. Delete from a string is also explained. Palindrome check is also explained. And then anagram check that I have been explaining recently. So, okay. So we created character array 1 to store the characters of the string 1, and then we take an input from the user to store the second string, and then sorted both the arrays and then compared if each character is same. Then if each character after sorting are same, then it means that the two strings are anagram of each other. Okay. And then the 22nd problem was count character occurrence. So the 22nd problem was count the occurrence of a particular character. So we will take input from the user to take the character for which we want to count the occurrence. Okay. Should I turn on my camera? I'm not feeling like it. Okay, I am revising. Find the most frequent character. We created a frequency array to map all the characters and count the frequency of each character. Okay, so we iterated through each character of the given string and then increased the frequency in the frequency map or frequency array. Okay, and the tracked the most frequent character and the maximum frequency. Okay. Mm, and then return the maximum element of the array. Okay, this is a very easy problem. And then remove duplicates. We used string builder result and used a hash set to store the unique values only. Like we added the character to the hash set only if it is not existing already in the hash set. Okay, so all the first appearances of each character will get stored in the hash set. And then yesterday we had solved check for only digits. Like we have to return true if it contains only
digits. So we use this method character dot is digit. Okay, so we will check for each character inside the given string and check if the character dot is digit is true. If it is true, that means it is a character. Sorry, it is a digit. And if it is not a digit, then it means it contains a character, and we will break the program here. Okay, the for loop. And the next was to capitalized words. We had capitalized each word, like the first letter of the words, into capitals. Okay. Then basic string formatting, how to use C++ type of formatting in Java. We used string dot format. My name is modulus of s. It is used for strings. Modulus of s is used for strings. Modulus of d is used for integers, and other I don't remember, that we will discuss or learn about them later. And simple string compression, we have to compress the string with the frequency of each character. Okay, so this has also been done. We have created a string builder result and a count variable initialized with value 1, and then iterated over the length of the string given input 1, and compared each character with the next character. Okay, so we started from left to right, and so we compared each character. If the next character is also same, then we increase the count, and if the next character is not same, then we append the previous character to the result and the count. Okay, I'm getting it. I hope you guys are also getting it. And check string rotation to check if string 2 is rotation of string 1. This is very easy. We use concatenate to add the string 1 to itself, and after adding it, it contains the second string, then it means it is rotated. Okay. And the final problem was validate IPv4 address. This was a quick implementation. You can see it here. And let's start solving the medium level string problems from the Strivers SDE sheet. So let's close it. Let's create a day 23 folder. Not here, but outside. So underscore 23 underscore. Okay, so we have created a folder for day number 23, and these are the remaining problems from day number 23. There are 6 problems, so we will quickly finish these problems. So the first problem is maximum nesting depth of parenthesis. So thinking of the first intuition, what will come to your mind? Let's read the problem first. So this is problem number 1614 of lead code, maximum nesting depth of the parenthesis. It is a easy problem, very easy problem. After learning these 30 problems, we can solve this problem very easily. So the given a valid parenthesis string s, return the nesting depth of the s. The nesting depth is the maximum number of nested parentheses. So we need to return the depth of parentheses. That means how many parentheses are nested inside. Like we need to return the count of maximum parentheses which are like nested inside each other. Okay. So how we can do it? We will start iterating from the left and keep iterating over and over again, and we will take a variable counter to, and whenever we encounter a opening bracket, we will increase the count. And if we encounter a opening bracket again, we will increase the count again. Then if we encounter a closing bracket, we will decrease the counter. So when we are on the first
opening bracket, the count will be 1. That means we are inside the first parenthesis. Okay, then when we encounter the second parenthesis, that means we are inside the second parenthesis and the counter will be equals to 2. But when we encounter the first closing bracket, the counter will become 1 again. That means we are in the first parenthesis. Okay, then count will be 1 again, and we will also be maintaining a variable maximum depth. Okay, so we will keep updating the maximum depth with the current depth. That means that is the count, and like the maximum of the current depth and the maximum depth. Okay, so at this point the count will be 1 and maximum depth will be equals to 2. And then at this opening bracket, so at this opening bracket the count will become 2 again, and after it there is a opening bracket again. So here the count will increase again. So now it will become 3 and it is greater than the maximum depth we have already encountered. So it will update it. So now the maximum depth will become 3. And then after closing bracket, the count will decrease to 2. And again, after encountering the closing bracket, the count will become to 1. And after the last closing bracket, the count will become to 0. So this is what we have to implement. So let's try to solve it. We need to return the maximum depth. ठीक है. So let's create a for loop for for character C in s dot to character array. Okay, we have converted the string to character array, and we will check for each character. First, I think we should remove all the leading and the trailing spaces by using trim. Okay, and then we can compare each character if the current character C is equals to opening bracket. Okay, if it is equals to opening bracket, then what will we do? Okay, we have to maintain a count variable as well. Let's say int count equals to 0 and int max depth is also equals to 0. Okay, so after this, we will compare if the current character is opening bracket. If it is the opening bracket, what we will do, we will increase the count plus plus, and update the maximum depth. Like maximum depth will be max depth equals to math dot max of count comma max depth. That means we will store the maximum possible depth, okay, or the count that we reached to. Else, mm, else if C, that means the current character is equals to closing bracket. That means we have encountered the closing bracket. We will return what we will return. We will decrease the count. That means minus minus, and will update. We don't need to update the max depth here. And anything else that we should consider? What are the edge cases it can have? Let's say the length, the string is empty if s dot length is equals to 0. S dot length is equals to 0, we will return 0. Okay, and what other edge cases can be there? So let's check here.
What are the test cases given? Okay, if it consists of only parentheses, it will be the okay. So we will return the max depth only. I am hoping that it is the correct solution. Return max depth. Okay. Let's try to run this program. Uh, ठीक है. This will not work here. So that method was incorrect. We should do strings are immutable as dot will it work? However, let's not think in like go deep into it. Let's try to run the basic implementation first. If it works, then it's great. And then we will try to check for the edge cases that are possible. So it is working fine. It is the like, however, it is giving 100%, uh, but it is not the best solution. It is the brute force approach. However, it can be improved, and we will also use timers from now. The better approach will be using a stack for take how to implement stack. So guys, I have not solved some problems using stack, so I have no idea how to use stack. But okay, let's update it here as well. Mm, let's ask ChatGPT to make a article or solution article for this. Okay, so hey GPT, I have solved this problem by myself. Create a proper structured solution article to lead code solutions. It is 100% in science complexity on lead code test cases and explain the intuition. Sure. Okay, let's first discuss the other methods that we can do. Or should I paste this solution already? Okay, intuition, step-by-step approach. No, I don't want. Okay, let's upload. I'm doing this for the first time. Uploading the solution on lead code solution, Control C. And where is lead code solutions? Can we share my solution? Share my solution. And on the share my solution, this is the code. Okay, here we need to update it, right? Let's copy it from here. Okay, update in this document.
How we can have solved it? Okay, 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 okay. So, solution we have already provided. Complexity analysis. I think this is just waste of time. Okay. Now what is the problem? How to post? Enter your title. This is still the पेस्ट भी नहीं हो रहा है. किसे कर देते पोस्ट. Stupid me. Doing some stupid things. Haha. So should we do the stack wala solution right now because I don't know how to solve it using stack. But, but. Okay, we will do.
this problem using stack when we will be learning and solving stack problems. So let's move to the next problem quickly. This is done, and let's move to the next problem, that is Roman number to integer and vice versa. Let's open the lead code link, and I had solved it earlier, so let's remove this code and try to implement it uh, by ourselves only. So, what was this? But so it in the solution I'm starting from, right? So let's discuss first note this curly bracket. Okay, so let's read the problem. The problem states that we need to convert Roman numbers into integers. Roman numerals are represented by 7 different symbols that we know we have been using in our schools as well. So the I represents 1, V represents 5, X represents 10, L represents 50, C represents 100, and so on. We need to convert the given string into integers. Okay. So what will be the like first intuition to solve it? मैंने वो सॉल्यूशन देख लिया तो मेरे को स्विच केस का आइडिया आ रहा है क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है वो. But there are different ways as well in which we can do the same thing uh, using hash map as well. But we will use switch case statement only. Let's say int now is equals to and we will take a variable as our answer in answer equals to 0 bin. And then we will iterate over the given string from right to left, that means from the last number to the first number, and we will check if it is I, V, or like one of these 7 letters, right? So let's make a for loop for int I is equals to s dot length minus 1. Okay. Um, uh, okay. So after I greater than equals to 0 and I minus minus, we will decrease the value of I, and we will check if the character at ith index in given string is one of these values. So how we can check? One way is to store it in a map and check the character if it like the current character is equal to one of these. So we are doing instead, we are using switch case statement. Statement is also similar as WITCH, in which we can like map all the 7 characters with a integer. So what we will do, we in switch case we will be comparing each character. That means so as dot character at ith index, right? I will be decreasing right from the last to the first. So we will
keep a check on all the characters of the given string, and there will be 7 cases. So the first case will be in case the current character is I. Okay, then we will take the num as 1. Okay, I hope the syntax is right. And in case 2, like not 2, in case of 5, we will take v. Like in case of v, we will take the number as 5. 5. And in case of x, that is num will be equals to 10. Case of in case of L, uh, number will be 50. Okay, and in case of C, the number will be equals to 100. In case of 5, sorry, D, the number will be equals to 500. In case of N, इतने रोमन नंबर्स तो मेरे को याद ही नहीं थे. कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? In case of M, the number will be equals to 1000. Okay, so few more things that we need to check again. First is the indentation and a break statement after num equals to 1. So we have to come out of the loop switch case, right? Let's copy it and paste after each sign. Okay, so we have mapped all the characters with their actual numbers. Now what we will do, like we are iterating over each character of the given string from right to left. That means from the last number to the first number. That means from here to here. So one thing we know that when a smaller number in Roman is written at the right side of the larger number, then it is added. That means 5 plus 1 plus 1 is 7. Okay. But if it was on the left side of the larger character, it was subtracted. That means if 5 was appearing before 2, like that is I and I, V was appearing before I and I, that then we would have subtracted these two numbers from our answers. So let's compare. Like we have stored the current character, that means I, V, W, X, Y, Z, whatever it is. We have stored the actual value of it in the num variable. Now we have to compare if it is greater than or less than the previous value. Let's create one more variable
where we will be storing the previous number. Okay, so what we will do, we will compare the current number with the previous number. That means if number is greater than previous, greater than the previous number, then what we will do, we will only add it, add it to the answer. That means answer will be plus equals to num. Otherwise, if, sorry, I think let's do the subtraction first. If the number is less than the previous number, that means I is coming after the 5, then we will subtract it from the answer. That means answer minus equals to num. Okay. Otherwise, we will add the current character's actual value to the answer. And then we will return answer. Return answer. Let's run it. Okay, we forgot to check the edge case for if it contains what if my output is 2216, but it should be 30K. Something is wrong with the. Okay, we have not updated the previous equals to none. Okay, and here also previous equals to none. Now let's run it. Now it is working. Let's submit it. It is working completely fine. Next problem is implement ATOI. That means converting ASCII value to integer. Okay, let's do that. Let's read the problem. What it says, implement my ATOI string as function which converts a string to a 32-bit signed integer. So, okay, that means string to a integer. So the algorithm is as follows: white space, ignore any leading. अच्छा पूरा algorithm तो दिया है. We have to just implement it. Okay. We have to ignore the white spaces. So first we will do as.frame. Okay. Sweet. And signless, determine the sign by checking if the next character is negative or positive, assuming positivity neither present. So
How can we remove the leading? We can store s is equals to s dot trim. Like we will trim all the leading and the trailing spaces from it, and then we देखो the first जो भी algorithm का first step थी ये completed. We have stored the trimmed string in the s variable itself. Okay. Now we have to check the first character. Okay. So let's take uh, int sign is equals to 1, and if s dot character at 0 is equals to uh, negative, then we will update the sign with -1. And what else we have to carry with us? That is the count of the characters. Mm, Count of characters. We will iterate using I. So let's create a variable I with 0. Let's say int I is equals to 0. And we will update I plus plus with this. And else if s dot character at 0 is equals to plus, then we will keep the sign as +1, like it will stay the same, and we will only increment the value of I. Okay, I plus plus. So up to this point, we are keeping a variable sign for storing the sign if it has the positive and negative. And then the third step in the algorithm is conversion. Read the integer by skipping leading zeros until a known digit character is encountered or the end of the string is reached. If no digits were read, then the result is 0. Okay, for this one more thing, if no digits were read, then result will be 0. We should also add one thing here. If the length of the s dot length is 0, then we will, sorry, s dot is empty, then we will return 0. Okay, and then up to we need to return the integer answer, but so we'll use a while loop. Okay, we have to use a while loop. Let's create a variable int result is equals to 0, and while I is less than s dot length -1, right? Length -1, and mm, and and what we have to check? We have to check that the character is a digit. Okay, only if the character is a digit,
we will update the result and add the integer value of that character. So for checking if the that particular current character is a digit, what we use something like first of s dot character at I. This is the character that we're talking about. We need to check if it is a digit or not. So what we do, character dot is digit, and inside it we will store this. I think it is the right syntax. Is it? I hope so. Then what we will do, we will update our result with the integer value of the character. Hmm. So how do we do it? Like as we do, how to in the array problems we used to do find the last digit and store it in how we used to do the reversing of the string. Hmm. Okay, but we are starting from the left itself, right? So it will not reverse it. So we will update result is equals to previous value of result into 10 plus plus. Now how to get the integer value of the that particular character? We will subtract the ASCII value of 0. Okay. So how to do that? We can do as dot character at I I minus the value of 0. Okay. It will return the ASCII value of that particular character. And we have to convert it to integer afterwards. This is right, okay? Mm. And we will increase the value of I and return so I plus plus, and then at the end we will return the result into the sign. Yes. I hope it should work. Wrong answer. First two test cases have failed. What is the problem? We are not reaching to the next. So we don't have to do this. Run again. It is working. Let's submit it. Test case fail हो गया. What we missed. Let's see the description. Rounding. अच्छा ये fourth step तो read ही नहीं किया था अपन ने. If the integer is out of the 32-bit signed integer range 2 to the power 31, then round the integer to remain in the range specifically. That means
integer less than the smallest value should be rounded to the smallest value of integer, and any value greater than this should be rounded off to the maximum value that our integer can store. So we have to do some changes. First of all, we will have to update the data type of our result. We will store it as a long and then result it as a integer value. Okay, explicit typecasting and how to like check for stack overflow. Mm, we can do if result is greater than math dot, sorry, not math, integer dot max underscore value, then what should we do? We should update the value of result result equals to integer dot max value. I hope it is right. One more thing we have to add star sign is greater than integer value, then it's not integer dot and not result, we will directly return it. Okay, we will directly return it. And if result star and it is not saying it is sign SIG and okay, it result star SIG and sign is less than integer dot min underscore value, we will return integer dot min underscore value. Okay, this is the only change that we have to do. Let's run it. It should work fine. Leave and let's submit it. So it is working, and this is also giving us 100%. And for your kind information, guys, I am not doing these problems for the first time. So don't feel like how I am getting these solutions. Like I have tried to learn the solution previously before starting the stream. We have many medium and hard level problems remaining that we will do after a break. The count number of substring is also an easy problem. Let's solve it. So on
So we are given a string consisting of only A, B, C. Return the number of substrings containing at least one occurrence of all of these characters. At least one, that means we don't include empty string. Okay. So it is just same as number of subset of a set, and the formula for, so if this is the given string of size 6, it is very easy. So we have to just return um, n is equals to s dot length, that we are storing the length of the given string in the variable n. And then what we will do, we will return n into n plus 1 by 2. This is the formula for number of subset of a set, right? Am I right? I had seen the solution, but I forgot the formula. n n into n plus 1 by 2. Let's try to run it. It's round. So what is this? If it is 6, ABC, ABC, why don't, okay, it has duplicates as well, so we have to keep count of that. ये तो यार कोई जीएफजी का ही सॉल्यूशन था। अच्छा ठीक है, छोड़ो। Let's do the chosen frequency. So let's see it. And frequency is equals to mu 256, right? 256. And we will store the frequency of each character. Let's solve this problem after a break.
These three problems are remaining for today. Mm,
Hello, we are back. Should I turn on my camera? कैसा लग रहा हूँ मैं? So let's quickly do the remaining problems. Visible? Yes, I am. Where's my bird? Now, both the screens are visible, I think. So now we have to solve these three remaining problems. One of them is hard, and I have not solved it yet. Mm, So how to solve it? First of all, we have to solve this count number of substrings. And I had seen the solution for it on GFG itself, which was the straightforward answer to count n into x plus 1 by 2. Count number of substrings in. आज किसी ने लाइव चैट पे मैसेज नहीं किया. देखो यहाँ पे भी ये यही बता रहा है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n is given by the formula n into n plus 1 by 2. तो वही हमने किया था, लेकिन it contains duplicates and we don't want duplicates. If the task with specific properties such as those consisting of same character, a different approach is required. Okay, we have to count the number of unique characters. Okay, is founded by identifying contiguous block of identical character and applying the formula count into count plus 1 by 2. अच्छा ठीक है, अब ये वाला अप्रोच लगा के देखते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है. So let's create a character array. Ch is equals to s dot to character array. Okay. Now arrows dot sort ch. Oh my god. Hmm, good. Okay. So okay, we have sorted the character array. Now we have to find the count of distinct elements. So how do we check the count of distinct? वैसे तो एकदम brute force approach लगा रहा हूँ मैं. It is not optimized to at any extent. So let's create a hash map or hash set. Let's create a hash map. Hash map of character and integer, right? Mm, Hash set. Okay, it is given that it consists of only A, B, and C, right? So we have only three characters. We can use a hash array, frequency array. Let's say int frequency
is equals to int, sorry, int, new int of size 3, right? The first index will store A, second index will, sorry, the zeroth index will store A, first index will store B, second index will store C. Okay. Why am I doing this? We need to count the number of substrings. And in its example, it consists of duplicates as well. But if it, okay, at least one. This was the problem. Am I audible? My OBS studio says that it is disconnected. Reconnection successful. Let me call. Friend, not friends, but there's a boy once working. Let's continue. Hmm. Okay, so what we need to do, we need to make sure that it exists at least once. That contains each character at least once. Okay, so we need to count the number of unique, but one more thing, it is to return
I'm not getting the right logic how to do this. 2 पॉइंटर अप्रोच लगाते हैं। आई पॉइंटर को लेते हैं, आई प्लस 1 पॉइंटर को लेते हैं, 4 I pointer we will iterate over each other character. Now Raja Gaddam is saying, bro, it will be very helpful. Thank you so much, bro, for joining us today. Okay, 154. It is really very helpful for myself as well. Okay, where are the tools? Okay, keep it there. Okay. Now, as we know that, let's say A, B, C, can be and C. So we need to find out the number of substrings of this string which contains at least one occurrence of each of these. So the very small substring will be A, B, and C. Then we will iterate after it. It can have egg plus C plus C A plus C A B, and then we will be right. How to come up with the right solution? Wait a minute. What do we have?
Okay, we can create a hash set of strings and add all the substrings into it and will return the size of the hash set. Okay, let's do this. Let's create the hash set of strings. What string? We have characters only, right? Okay, strings that will contain strings only. Okay, okay. Result equals to new has set. Okay, now we will iterate and we need to have to use that int and is equals to as dot length and then we will use two pointers int I is equals to 0, I less than n, I plus plus, and then we will use our inner loop for int j is equals to I plus 1 and j less than n, j also, and then we will have to do what we have to do. अभी तो देखा था मैंने. We have to add the substring result dot add s dot substring starting from I ending at j. Okay, and then we will return result dot size. This is right. This is the right method, I think. आंसर गलत आया, क्यों आया? What's wrong with this now? It will only increase time. We need to remove the number of substrings which does not contain all of the three characters A, B, and C. So this was a different problem.
Okay, this is a different problem in which we have to count the non-empty substrings. So for which the formula is correct. But in case of n to n plus 1 by 2. Okay, this problem is also available on code. So इस पे ही करते हैं. We need to return has set का यूज करते हैं. Um, let's say int n is equals to s dot len, and let's take long count is equals to 0, and for int I is equals to 0, I less than n, I plus plus. Okay, now we are iterating over each of the such things, and then we will store the characters in the hash set. Hash set is equals to new hash set. अब क्या करेंगे? We have three characters, right? A, B, and C. So we will check once the hash set contains like एक बार सारे characters encounter हो जाएंगे उसके बाद के सारे हम substrings को consider करेंगे. So let's create another loop for int j is equals to I, j less than n, j plus plus, and then we will add set dot add s dot character at j. Okay, so we will keep adding the new character to the hash set. Once the size of the hash set becomes 3, that means we have encountered all the 3 characters, then only we will count this substring as a substring that we want to take. Okay, so if set dot size is equals to 3, okay, if it is equals to 3, count will increase. Okay, that means we will consider this as our answer substring. And hello, Rahul, welcome back. Finally, you are here. I was feeling bored today. कोई लाइव चैट पे मैसेज ही नहीं कर रहा था. If set dot size is greater than k, that is not possible.
and then we will return count. Hello, Rahul bhai. What is up, Rahul? How was your day? How are you doing? What is going on? Mm, okay, we need to return. भाई कौन सा क्वेश्चन है ये? ये है स्ट्रिंग्स का प्रॉब्लम है. This is the problem number fifth of medium string problems. Okay, मीडियम वाले स्ट्रिंग्स का प्रॉब्लम नंबर 5 है ये. टाइम लिमिट एक्सीडेड. टाइम लिमिट एक्सीडेड. सो वी कैन नॉट. कल तो टेस्ट है मेरा, तो पढ़ाई करो फिर. सी यू टुमारो. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ रही है. वी नीड टू थिंक ऑफ द ऑप्टिमल अप्रोच. कल टेस्ट है तो आज अभी मैं देखता था. ये वाला प्रॉब्लम हमें तो मीडियम है तो अच्छा नहीं हो रहा है. इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिया ना स्ट्रगल की शीट पे. We can pre-compute three linked list of indices of each ABC. क्या ये स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम्स इतने अनाइंग क्यों होते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करते हैं. I was thinking कि मैं जल्दी खत्म कर दूंगा. But solve this first. So this problem will be solved using sliding window, sliding window bi-weekly contrast.
Square tag is missing. हाँ बिल्कुल। राहुल इज आस्किंग, भाई आज कॉलेज में एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफर आया है, क्या करूं? फॉर्म फिल कर दूं? डेफिनेटली ब्रो, स्टार्ट अप्लाइंग। नैनीताल में? you should fill it bro, don't miss any opportunity. int left equals to 0। स्लाइडिंग विंडो कैसे करते हैं, मुझे आता है क्या? एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है, राइट को एक्सपेंड करते जाते हैं according to a condition, but what will be the condition? तो तुम्हारी कोई बैक है क्या? करंट बैकलॉग नहीं चाहिए रहता। Count equals to 0, we will keep the count of the substrings which are valid and distinct characters that a substring has. So we will only consider those substrings which have three distinct characters, that is A, B, and C. Now for int right equals to 0 and right less than n and right plus plus, let's create character C is equals to s dot character at right. A, B, and C are already given, right? Yes. Then if frequency of C equals to 0, that means we have not encountered this particular character before. We will increase distinct count and frequency of that character will also increase. Then we will have to use while loop while distinct 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 is greater than equals to 3. Okay, then only we will take character I think I should practice more similar problems.
before moving to the next problem because I'm not able to come up with the solution by myself. In the meantime, while distinct is greater than or equals to 3, sliding and domino, we have the right pointer, we have the left pointer, and we will check for the distinct. While distinct is greater than or equals to 3, count will be equals to right minus left plus 1. Let's do one thing. Open our Copilot and ChatGPT. Where are you? Write a detailed prompt for Copilot to list 5 easy to medium problems on the variation of substrings, count substrings of a string in Java with order and increasing difficulty with explanation of the possible approaches and how to think of them with the solutions. Mm, Let's go this it and create a new file here in which we will be doing it. So this is count substring, count substring problems. Okay, that's one. So what we are trying to learn is how to count substrings of a string and the different variations of this problem. So when I am not able to come up with a solution, I do this to learn how to approach a problem. And you can do this too. It will take some time
Cloud Sonnet 4 we are using, but the only flaw is that it takes a little more time than other GPTs, but it gives a proper, like, a good response. Guys, am I not good at communicating my thoughts and or interacting with you? Because many people are watching a live stream, but no one is really interested in sharing their thoughts or like helping me in the live chat. Okay, so it has created master different substring counting techniques, understand brute force versus optimized approaches, learn sliding in and dynamic programming patterns, handle edge cases in a string problems. Okay, so let's read it what it has created. So I've created a comprehensive educational resource covering 5 progressively difficult substring counting problems in Java. Here is what's included. So count all substrings. This is the easiest problem. Mathematical formula approach जो मैं try कर रहा था पहले, like n into n plus 1 by 2. So this is the easiest problem. Then the easy to medium problem was that we were trying to do, but we were not able to. That is count unique character substring, easy to medium. And then the more difficult one was count palindromic substring, and we had to do this without dynamic programming. Count substring with k distinct characters medium, and count balanced parenthesis substring medium. So, okay, complete problem structure, clear problem statement with example, detailed intuition and thought process, multiple approaches, clean and well commented Java implementation, educational element, progressive difficulty, professional formatting, technical techniques covered, mathematical formula has said these two techniques we were able to think of by ourselves, but don't, I could not solve it using sliding window because मेरे को नहीं आ रहा sliding window कैसे implement करते हैं, and then expand around centers for palindrome, balance contour, dynamic programming. Okay, let's see this now. Keep it. Now, this guide covers 5 progressively difficult problems related to counting substrings in Java. Each problem includes intuition, approach, complexity analysis, and clean Java implementation. So the problem number 1 is given a string, count the total number of substrings possible. So this problem we were able to solve very easily. We had to solve use only the formula, right? Generate इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा तो उसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन मतलब सारे सबस्ट्रिंग्स को काउंट करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला which has time complexity of 1. ठीक है, iterative count substrings starting from each position, that is n square. ये वाला तो ये वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी न्यू है, but so this is the first method to use mathematical formula, and then this is the iterative approach, mathematical. Okay. Think about what defines a unit substring, start and end position for a string of length 1, substring length 2, substring length 3, there are 6 substrings. Okay. Then this is the problem where we were stuck. Count substrings with unique characters. So how do we count? Hmm. So problem statement is count the number of substrings that contains only unique characters. That means at least once there should be A, B, and C.
नो इट इज डिफरेंट। जो प्रॉब्लम हम कर रहे थे उसमें कहा गया था कि सारे कैरेक्टर्स एटलीस्ट वन एग्जिस्ट करने चाहिए। इसमें इसमें कह रहा है कि इट शुड कंटेन ओनली यूनिक कैरेक्टर्स where no character repeats, using sliding window technique to maintain unique character window. When we find a duplicate, we need to shrink the window from left. ओके, ब्रूट फोर्स चेक ईच सबस्ट्रिंग, ये वाला प्रॉब्लम तो लाइक ये वाला अप्रोच हमने किया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई थी। देन देयर इज स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, यू विच विल sliding window, then how to implement sliding window. So complexities of and for optimized approach. So the Java solution is, first we will check if it is null or length is 0, then we will return 0. Then we will create a count variable equals to 0 and n equals to s dot length for storing the length of the string. Then for each starting position, we will mm, okay, create a hash set for scene and then extend the substring from the position I. mm, okay, for character c equals to, ये थोड़ा easy नहीं लग रहा, we had to do is, there are two pointers. This is the starting pointer for the sliding window, and J is the ending pointer for sliding window. And we have created a set of characters where we will store only those which we have seen already. So if scene dot contains C, then we will break this loop. That means this string will be breaked out and count will not increase. Otherwise, we will add the character to scene. So this will increase the count for unique substring. I'm still confused. What is happening here? Let's try to implement it. Let's ask Copilot to explain this problem as well.
Okay, so it has four different approaches to this problem. Real interview question. This problem has been asked in real interviews. Perfect difficulty progression fits perfectly within k distinct and balanced parentheses. The algorithm insight if ij is valid, then ik for all k greater than Joe is also valid. Sliding window technique. So it means the genius of this problem states the key insight is once you find a substring left to right containing all the three characters, all the substrings from left to k where k is greater than equals to right also contains all three characters. So we need to find the first set of substring where he contains all the three characters and then we will count all the remaining substrings from the right to the end. Okay. And minus right valid substrings in one step instead of checking each one individually. Okay, let's see the solution here. As dot length is less than 3, then we will return 0. Okay, this is the straightforward thing. Then we will track the last sim position of ABC. Last sim equals to -1, and that is for ABC. Count equals to 0. Then we will equate from I equals to 0 to the length. Character update last seen position for current character. Last seen C minus A equals to I. Okay, okay. So if it is I, then it will be 0. If it is B, okay. Find the minimum of last seen position leftmost bound to. Minimum of the last seen position. Last seen of 0, comma 1, comma 2. Position. That means leftmost position we will find out. We will try to find the leftmost position of. Okay, if the all characters have been seen, min position is not equals to -1. Okay, that means minimum position of all of these. If it returns -1, that means one of the character is not tracked already. So if all characters have been seen, it is not equals to -1. All substrings ending at I and starting at or before are valid. All substrings ending at I and starting at or before minimum position are valid. So this is the most efficient approach. I think I should have started from the brute force approach. So this thing I got it that it should not be empty or the length should not be less than 3. That means mm, okay. And then we will check all possible substrings. Boolean has A, has B, has C. Okay. Then 4 into J equals to. But इसकी time complexity ज़्यादा हो जाएगी जो हम I think we have already done this, right? This is the brute force approach. This thing we were getting already, and we are confused with the optimized approach.
Character count for ABC that we have done already. Distinct character equals to 0. Int right equals to left, right less than. Okay, this is what we were trying to do. If this character appears for the first time in the current window, character count equals to 0. Distinct character plus plus. Character count. Okay, if we have all the three characters, all the substrings from current, right to end are valid. Current right to the end are valid. Count plus equals to n minus right. Count plus equals to n minus right. Okay. Okay. Now I got it. This approach is the best. Now I got it. Now I got it. Okay, let's get back to the. This is like this is what it is. So if the given string is null or the length of the given string is less than 3, then we will return 0. Okay, here we are looking at this solution provided by our Copilot. Copilot, thank you so much for helping us. So this is the first thing that we do it, and then we will take count equals to 0. Okay, and then we will create int n. Mm, So int n is equals to s dot length. It now we had done by ourselves. Then we will use for loop int left equals to 0 and left is less than n and left plus plus. Then what we will do, we will create a character count array. Character count equals to new int 3. Okay, count for ABC. Int distinct equals to 0. ठीक है. This approach with hash map. Mm, So this is
inside the for. Okay. Then we will iterate for the right pointer of the sliding window, that is int right equals to left. Starting from left, right less than n, that is the size of the string, and then right plus plus. Okay. So we will create a window. I got it. Then what we will do, we will create a character c equals to s dot character at right. जो rightmost character होगा उसको हम store करेंगे character में, and then we will compare if it exists already or not. So if character count, okay, if character count of this current character is, that means c minus a, right? It will return the character count of the current character, right? So we have to compare if it is equals to 0, then it means the character distinct count will increase. Okay. And then character count will also increase, c minus a plus plus. So we took the left pointer, we created a distinct count, we created a right pointer, we stored the rightmost character in the character c, and then checked if the count of this character is 0. If it is 0, then we will increase distinct count, character count will increase. Now, if we will check if distinct is equals to 3, then we will add all the substrings. Okay, count plus equals to n minus right. That means कि राइट पॉइंटर के बाद के सारे सबस्ट्रिंग्स को हम इसमें काउंट कर लेंगे और इस लूप को ब्रेक कर देंगे. No need to extend further from this left, and then we will return count. बट मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे कि ये अप्रोच जो है वो स्लाइडिंग विंडो का है, तो लेफ्ट को हम श्रिंक नहीं करेंगे क्या? हाँ, लेफ्ट अपने आप श्रिंक हो जाएगा. ओके, आई गॉट इट नाउ. लेफ्ट विल गेट श्रिंक afterwards once we encounter all the characters once. Okay, okay, now I got it. Now I got it. Now I got it. बस अब ये अप्रोच मुझे याद रहे. So there are four approaches to solve this problem. One is to use sliding window with hash map that we did right now. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है? अच्छा, पहले देखते हैं बाकी सारे लोग कितना सॉल्यूशन सोच पाए. लाइक मेरे सॉल्यूशन की स्पीड तो बहुत स्लो है. people did people created a last scene array and a count variable, and then last scene को चेक किया, count equals to count plus 1 plus math dot minimum of this. How do they count increase the count? My mind is just F.
So I'm just surviving the stream, bro. Okay, let's count it then. Count number of substrings. I thought it would be very easy. And then there is this count palindromic substring. This was the fourth problem, right? I think I need more time to practice strings problem. So this is marked as the hard problem. I am feeling demotivated. How will I be able to solve all the problems in the sheet in 45 days if I'm not able to solve this easy problem? What should I do? Where is it? I don't want it. Okay. It is counting palindromic substring and we need to return longest palindromic substring. Okay.
try. Mm. Let's say int and script equals to len, and then we will compare all of the possible substrings. Okay, and then we will सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जो चेक करेगा कि given substring is a palindrome or not. So that thing we had learned yesterday and we are able to do that. So let's create is palindrome string s, and let's create int left equals to 0, comma right equals to s dot length -1, and while left is less than right, then we will check if the left character at the left index is equal to character at the right index. We will return false. So if s dot character at left is not equals to s dot character at right. Okay, then what we will do, we will return false. That means it is not a palindrome. Return false. And one more thing, we will increase left plus plus, right minus minus. If it executes completely, then return true. So this function checks if the given substring is a palindrome or not. Then we will iterate over each substring. Mm, We will iterate over each substring. So for int I is equals to 0, and constant and I plus plus, and then for int j equals to I, j less than n, j plus plus, then we will create a string substring string substr equals to s dot substring between I comma j plus 1. Okay, it will store the substring from I to j plus 1. And then if this particular substring is a palindrome, that means is palindrome, that method we have created, palindrome substr substring. Okay, let's create one more thing. We have to store the longest substring, right? Let's create an empty longest substring, and then we will check if if it's greater than how, if the length of a substring dot length, which length
is greater than longest substring, then we will update the longest with the current substring, and then we will return longest. Okay, let's run it. This is a simple brute force approach. कुछ तो गड़बड़ है. Is palindrome okay? ये नहीं लिखा मैंने. Now let's run it again. Could not find the symbol. LENGTH होगा. Spelling error. Okay, it ran. Let's submit it. It's only 5% of solution. The difference between the frequency of the most frequent and the least frequent character. Okay, so let's create int frequency equals to no int. So all the characters will be lowercase only, right? S consists of only lowercase English letters. So the length of the frequency array will be 26 only. 26, right? Then if we will iterate over for I is equals to 0, I less than n, I plus plus. This is an easy problem. So this सारे characters पे iterate करेंगे and we will increase the frequency of s dot character at I. Okay, and plus plus. It will increase the, it will count the frequency of each character in the given string. Okay, then we will iterate over I is equals to 0, I less than 26, right? And I plus plus, and we will check for the maximum and the minimum frequency. So let's say int max frequency equals to 0 and int min frequency is also equals to 0. So we will check frequency of I, sorry, max frequency is equals to
math dot max of max frequency comma frequency of current element I. Okay, and the minimum frequency will be equals to math dot min of min frequency comma I. Okay, this way we will have the maximum frequency element and the least frequency element. And then we have to return what we have to return. Beauty of a string is the difference. We have to return the sum of beauty of all substrings. ये तो दिक्कत हो गई पोपट हो गया ये इजी नहीं है ये इजी नहीं है सारे सबस्ट्रिंग्स का ब्यूटी काउंट करना पड़ेगा आई वाज काउंटिंग द ब्यूटी ऑफ ओनली गिवन स्ट्रिंग हाउ टू डू दैट ओके ये वाला फंक्शन पूरा बनाते हैं सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग्स ठीक है करेंगे वी विल डू इट ठीक है इतना पार्ट समझ में आ रहा है ठीक है व्हाट विल बी द ब्यूटी ब्यूटी इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी बिटवीन द frequency difference in frequencies between the most frequent and the least frequent character. So we have the most frequent and the least frequent thing. Let's copy it and create another method public int beauty of str. Okay, given substring and it will take input as string s and we will do the same thing that we were doing. It will count the beauty of that particular substring. Okay, so maximum frequency, minimum frequency, and we will return the difference. Okay, so return maximum frequency minus minimum frequency. Okay, it will return the beauty of that particular substring. And here we need to return the beauty sum. So int beauty sum equals to 0 and then we will iterate over each substrings for int I is equals to 0 I less than n is the length of the given substrings in a string s dot length length and while I is less than I plus plus for int j is equals to I j less than n j plus plus so we have a window of substring ठीक है substring is let's create string sub sub equals to s dot substring comma I comma j plus 1 j plus 1 okay
Okay. And then what we have to do? Beauty sum plus equals to beauty of str of sub. And for each substring, we will count the beauty and then add it to the beauty sum, and then we will return the beauty sum. Mm, 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 Beauty sum. This is the first problem of today that was really very difficult for me, and I have solved it all of it by myself. And now I'm hoping that it should run without any error. And if it gives any error, I will index out of bound for length 26. सॉरी यहाँ पे एन नहीं होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी सॉरी frequency dot length. Okay, let's run it. Silly error. Again, out of bound for length. Why? S dot character at I. सारे स्मॉल केस लोअर केस के कैरेक्टर है तो आउट ऑफ बाउंड कैसे जा रहा है 26? यहाँ पे तो लाइक एन ही होना चाहिए था एन चलो इसको 256 कर देते हैं लेट्स रन इट रन आंसर सम जीरो कैसे अरे सम अपडेट नहीं हो रहा है क्या इसको भी 256 कर देते हैं बाय what is wrong in this solution
Let's update it. So maximum frequency to calculate integer dot max underscore value, not max value, and integer dot max underscore value. Okay. हम्म, इसको चेंज कर देता हूँ फोर फोर ईच लूप लगाते हैं फोर इंट एफ इन frequency we will update my frequency with math.name of min frequency comma f and max frequency is equals to math.max of max frequency comma f. Okay, let's take this whole code. अच्छा ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर एट आई माइनस ए नहीं किया, I minus A. Now it will work correctly. Hmm, now it should work correctly. Necessary. Let's watch it. Again, wrong answer. It is the code. यार चैट जीपीटी ही बताएगा आपको, है ना?
It is saying that we will assess it only to f greater than 0. Thanks on this test. अरे वाह, it was that simple. Was kind of solution. The strings will take my life away. Box strings. Yeah, I will have to practice more problems on strings, easier ones. अभी ये तो इजी प्रॉब्लम्स थी यार, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स तो अभी ये लास्ट लेक्चर में है. हार्ड प्रॉब्लम्स, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रैकेट रिवर्सल, काउंट एंड से, हैशिंग इन स्ट्रिंग्स, KMP, व्हाट द फक, हार्ड प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रिंग्स. कौन कहता है स्ट्रिंग इजी होती है? अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग और रिकर्शन नहीं पढ़ा मैंने. Longest substring without repeating character. Oh, fuck it.
लिंक्ड लिस्ट पढ़ते हैं आप। Introduction to linked list. Learn about struct and how is not represented. So today we will start linked list. Finally, strings को बाद में देखेंगे या guys। आज strings जीत गई, मैं हार गया। What is linked list? It is a linear data structure that can be visualized. I think I should take a break for 5 minutes. Then I will be back. Let me have some water. Okay. I will be back in 5 minutes. I will be back in 5 minutes. Mm, Let's open. Started 3 hours ago. Yes, bro, you are finally back. Thank you so much for coming. मेरा दिन अच्छा हो जाता है तुम लोगों को देख के। बाकी सब तो आते हैं चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। एंड हाउ वाज योर डे, वंसा? And then we'll start learning linked list. Okay, linked linked list, and we'll solve around 20 to 30 easy problems on linked list. I'm not forcing you. I am just telling that I feel good when seeing your chats. क्योंकि एटलीस्ट कोई इंटरेक्ट तो कर रहा होता है, बाकी तो no one is interacting and people come and go. Seeing that I am not able to solve problems, I feel like, अरे वाह, congratulations, Vamsa. Vamsa, you can understand Hindi, right? You are Telugu, but you can understand Hindi, right? Easy problems of linked list. Mm, Right. So, Yes. Okay, कल से holidays हैं, full on DSA for 10 days. Then it's great. We will be going all in. मेरा टेस्ट कब है? मेरा मेरा असेसमेंट 29 को है अब। सो टिल 29 आई विल बी गोइंग फुल ऑन। तो मैं भी 29 से तक तो आई विल बी बाइनरी सर्च। इट्स ओके। ऑन सैटरडे संडे वी विल रिवाइज एंड टुडे इज वेडनेसडे ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आई शुड रिवाइज ऑल थिंग्स। यस यस यस, ऑनलाइन असेसमेंट है मेरा 29 को।
Mm. Can you wait for a minute? Let me bring my water bottle and then we will have some introduction and after that we will start linked list. Okay. Just I will be back in a minute. Okay. अरे वंटा हेलो 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 आई एम बैक मैं कह रहा था कि लेट्स हैव अ माय टीममेट्स आर सो क्रेजी यू आर लकी ब्रो मैं क्या कह रहा था लेट्स हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन ऑन डिस्कॉर्ड सर्वर इफ यू आर कंफर्टेबल कैन वी क्रेजी 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 सॉरी गाइस ओके Amprex, we are looking for a creative graphic designer. Let me open the live chat. Sorry, guys. Mm, sorry. Dhruv Kaur. Hi, bro. Uh, you back? Yes, I'm back. Let me drink some water. What do you say? Vamsa, should I apply for a graphic designer somewhere? I'm good at graphic designing, right? थंबनेल अच्छा बनाता हूँ ना मैं? अरे मैं क्या कर रहा था कि डिस्कॉर्ड पे आए क्या? Even I am not getting selected, bro. They are saying that I can get paid if I work well, but मुझे ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना है. वमसा आई वाज सेइंग कि डिस्कॉर्ड पे आए क्या? कैन यू हैव वन ऑन वन टॉक ऑन डिस्कॉर्ड? Yes, I am thinking that I should apply if you are comfortable. Hmm.
Okay. Hello. Hey. Vamsa. Am I audible? Am I audible, Vamsa? And how are you? I'm fine. हिंदी आती है आपको बोलना? सॉरी, आवाज ठीक से नहीं आ रही है यार। और स्ट्रीम पे तो सुनाई नहीं दे रहा होगा, आई गेस। हेलो। अब ठीक है ना? अब ठीक है। यस, अब ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, अब ठीक है। आ रही है आवाज तो। मैं बस ये कह रहा था कि तुम्हारी आवाज शायद स्ट्रीम में नहीं सुनाई दे रही होगी। सो हाउ वाज योर इंटरनल हैकाथॉन? कैसा रहा? Like it was like the mentor was different. Like I don't know. Like it was differently seeing the UI part prototype. कैन यू स्पीक स्लोली? आई एम नॉट Yeah, गेटिंग okay. एनीथिंग। Yeah, okay. Now it's now okay. Now it's okay now. आई डोंट नो, आई कांट मैं अंडरस्टैंड द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ ना? हाँ, क्या बोल मैं रहे हो क्या तुम? बोल रहा हूँ ना? हाँ, बोलो। इंडिया हिंदी में बोल लेते हैं। Like ये प्रोटोटाइप है ना? हाँ, प्रोटोटाइप है। Like it was telling प्रोटोटाइप है। तो प्रोटोटाइप में UI एलिमेंट्स है ना वो बहुत एनहांस करने का थे। ओके, यूआई यूएक्स को बहुत एनहांस करना था। But the problem is about the rulers also, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? rural areas also. It's about the internships which are not getting now in the fifth semesters ओके, now. यू आर नॉट So गेटिंग। they want for that. ओके, दे वांट टू। Mm. Like they want an app like which breaks all the fields like urban and the rural areas. ओके, So we think that in the rural areas they are not much illiterate, so they will not understand the UI friendly designs. So we made a minimalistic, ओके, यू मेड इट simple मिनिमलिस्ट। one. ओके, Like it should be simple, like everyone they are using it. So that we told to none the your Gen Z case use vibe coding is telling the ओके। uh, that only one part is that a mistake. All things are fine for now. आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स क्लियरली यार, आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। Um, okay, wait a minute. Okay, let's come back to the like live chat. Now, We will connect on direct call. Okay. I think there is some problem in my earphone only. That is why I'm not getting your voice yes, properly. Okay. okay, मेरी मेरी okay. बातें, मेरी आवाज तो समझ आ रही है ना? Now, Ari, Okay. We will connect on like somewhere else, maybe on Instagram. Okay. And yeah, okay, after the live stream. Okay. yeah, okay. I will be sleeping now. You you Yeah, will be I will be sleeping. you will be sleeping after the live stream. Okay, it is fine. Then we can connect on tomorrow. Okay. Yeah, okay, In the no daytime. problem. Okay, Yeah, if okay. you are comfortable. And thank you so much, yeah, Yeah, Vamsa. You have been a source of energy for me for last few days. Thank you so much. And for uh, being the moderator of you our have my energy for doing server. this. Okay. You have And my energy to do this one. what are you saying? Like you're also my energy to motivate myself in the DSA problem. In the DSA problem, what did you say? I could not understand. I'm really sorry. Yeah, and like, Okay, you are learning DSA problems, right? Hello. I have texted you Okay. in the DC.
Discord. Okay, you are my energy in my DSA problems. Oh, that's a great compliment. Thank you so much, Hamza. And I'm really very grateful to have you on my live stream. Thank you so much. Okay, let's get back to the live stream. Okay, let's learn Okay. linked list. Okay. Okay. Okay, bye. Okay. Okay. So, is there anyone in the live chat? वैसे लाइव स्ट्रीम में आवाज नहीं आ रही थी आई गेस मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी क्यों नहीं आ रही थी हेलो मेरा अच्छा मेरा फोन बंद है इसलिए मेरे को सुनाई नहीं दे रहा ओके लेट मी चेक फर्स्ट not that limited list reproduction and we are back. Let's close Discord. Mm, and both the screens are visible. Let's get back to the live chat. You got my okay, I got my voice in stream. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. We will maybe there was some problem with the mic or my speaker. That is why I was not able to hear your voice or listen to your voice clearly. Right. Let me check it on my phone. Okay, so people have started joining for today. अच्छा तो आज linked list करेंगे. We will learn about linked list today and then solve DSA problems tomorrow. So guys, should we start linked list? Where you will be there for only 20 minutes. Where? What are you talking about? Tomorrow or in the live stream today? Okay, okay, okay. It's completely fine. Uh, मेरा भी आज का लाइक स्ट्रिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. स्ट्रिंग ने बहुत परेशान किया मुझे. मेरे से स्ट्रिंग्स के प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे हैं जो कि आई हैव टू बिल्ड सम स्क्रैप. ओके.
You were speaking fine. I don't know. I was not able to listen carefully. Okay, let's get back to string builder and heap and HCP concepts. में है. What do you mean? Like string builder वाला part तो easily समझ आ जाता है मेरे को. But the problem arises in sliding window technique. Okay, when it comes to sliding window, I struggle a lot. And अभी तो like मैंने थोड़ा सा wrap up कर दिया strings को. Strings नहीं बन रहा मेरे से. We will try to solve string problems tomorrow, or in our revision series, we will try to practice more strings problems. Okay, and today we will create a new file, learn linked list ll. Okay, and in this we will generate the same. Okay, here we will create. Let's open our VS Code only and our Copilot, and we will ask our Copilot to prepare a resource file exactly. um, okay, let me search. कहाँ से उठाया था prompt? Not here. On the live stream, we have PSA document on prompt. There it is. Java string learning from. Where is it? There it is. Um, so we will prompt ChatGPT to write a detailed prompt for AI to list 20 very basic problems for learning and teaching. Linked list. Okay. I like it. Linked list in Java with proper order of learning with the topics to learn and implement each problem. Okay, let's do this in our new chat and paste it. Mm. This is how we will learn linked list with the help of 20 easy problems quickly. Okay. And any one of you is starting or revising linked list, you can also do the same. Follow along with us, or you can do on your own. We will copy this prompt and give it to our agent. That is our co-pilot. Okay. Should we start a new chat? We should, or we should not. We will iterate over here only. And here I have given this prompt. Make the markdown. It will be clean and nice one. It creates markdown by itself, like the readme file type kind of text file. कल वाला स्ट्रीम देखा था क्या? कल वाले स्ट्रीम में इतना प्यारा रिसोर्स क्रिएट किया उसने कोपायलट में. वेयर इज इट? हाँ, डे 22 था ना कल. ये देखो, बेसिक प्रॉब्लम्स लिस्ट करने को बोला मैंने. Like it created a really well structured format.
यहाँ पे मैंने 30 प्रॉब्लम्स लिस्ट करने को बोला तो उसने पूरे फेजेस में डिवाइड कर दिया और स्टार्टेड फ्रॉम लाइक एब्सोल्यूट बेसिक। ये रहा ना, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पूरा रिसोर्स क्रिएट किया है, ये को पायलट ने ही किया है क्रिएट, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद इट। So I thought now every time I will learn a new skill, oh sorry, new topic in DSA, I will first ask Copilot to create a resource file listing all the problems, easy problems to learn the basics first, and then we will jump on that. ले आया था मैं। हाँ, then we will jump on the Strival SD sheet. Okay, first we will learn the basics with the help of Copilot, and then we will jump on Striver's sheet. बस एक ही issue है कि it takes a little time. Okay, now it is created. This is a carefully structured progression of 20 basic linked list problems designed to build your understanding from absolute basic to practical application in Java. Okay, each problem introduces one new concept at a time. Sure. It's okay. So it has created all the list of problems. What is a node? Okay, it has created 6 phases. First phase is foundation, problem 1 to 4, understanding nodes and basic structure. So the problem number 1 is create a node class. Create a node class that can hold an integer value and reference to the next node. Okay, it has added that as well. Okay, keep it. Okay, good one. It's crazy, yeah. But I don't know how much it will help in linked list as it had been strings. Okay, use constructor to initialize nodes. Understand the basic building block of a linked list task. Create a node class that can hold an integer value in reference to the next node. Create a few nodes and link them manually. Into data node next. Use constructor to initialize node. Practice node and equals to new node 10. I'm still clueless. Now, let's say also add the theory of linked list. Okay, let's do this with ChatGPT only.
Okay, in this way we will have some theory as well. Um, let's create a new file, linked list theory, and it is okay, which is the best model? Sonnet 4 UTCAS and enter. I'm also new to linked list. I will also see it. Okay, so we both are new to linked list. Learning from scratch is interesting. कितना टाइम क्यों लेता है यार? Even I know that linked list has a node for the previous link and the next node and the previous node. Something like that. I had tried to study, but I forgot. I don't know, just implementation. Same here. Like, I know what is a linked list, why it is used. It is used for like updating the element. It replaces array because in array, if we have to like shift some element or do some shifting operation, we have to move all the other elements as well. Okay, basic operation, key learning. Okay, so here it has created. Keep it. So here it says, welcome to your linked list journey. So this way we are creating our own authentic resources as well for Codecules. Okay, so this interactive program will transform you from a complete beginner to a linked list expert. Okay, learning philosophy, understand the why before the how, build concepts incrementally with practice, interactive exercise with hints and guidance, manual implementation. Okay, your learning paths, fundamentals, understand the basics. Okay, let's start with the basics. So, what is a linked list? Think of a linked list like a treasure hunt or a chain of clues. Each clue node contains some information, data. Okay, so each clue also tells you where to find the next clue. Next pointer, you start with the first clue, head and follow the chain. Your last clue says and your pointer or points to nothing. That is null. ठीक है, समझ आ गया? ट्रेजर हंट की तरह या ट्रेन की तरह है। ट्रेन के हेड से स्टार्ट करेंगे हम और हर नोड के पास सब सम इंफॉर्मेशन होगी और एक और पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। और दिस इज द मेन reason why we use linked list is that arrays are like apartment buildings. Direct access to any apartment index base, matlab why arrays are used for accessing any element in O of one time complexity, right? But इसका size fix होता है, hard to remove apartments in the middle, memory waste if many empty apartments are there. But linked lists are dynamic in size, easy to add or remove cards anywhere. No memory waste, only allocate what you need, no direct access. Must walk through cards to reach destination. So the only con of linked list is that you can't access
any element directly. You have to go from the start to that particular point. Interactive question. Before you code, can you think of real world scenarios where you'd prefer a linked list over an array? तो कोई बताएगा कि लिंक्ड लिस्ट का यूज कब होगा? Class node int data node next. Constructor to create a node. Okay, so we will create a class node and give it some data and a node next. So next will be storing. So node is, you can say, is a data type, and next is the name given to that node, which will point to the next node, and here it has created a constructor. So int data, like we will create a node with data. So data will be stored in that particular object's data, and next will be pointing to nothing. Creating and connecting nodes manually. Public class basic node demo. Node first equals to new node 10, 20, 30. Okay, so in this way we link the two nodes. First dot next equals to second. Second is the name of the node. Okay. Initially it will be pointing to null. Create your first chain. Let's create this. Mm, Write our first exercise. Underscore 01 underscore LL. What happened, Vamsa? LL.java. Okay. And let's keep it here. Mm, Okay, it is completely fine. See you tomorrow. Should I end the stream? We will start linked list tomorrow. मैं अभी बंद कर देता हूँ आज का स्ट्रीम यही. कल ही स्टार्ट करते हैं लिंक्ड लिस्ट. People who are watching. हाँ हर्ष क्या कह रहा है? क्या कर ले लाइक एंड कर लूं या फिर कंटिन्यू करूं लिंक्ड लिस्ट? आज ही करना हो तो कर लेते हैं. अरे मैंने बंद तो नहीं किया ना. तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं. क्या है पहली एक्सरसाइज? क्रिएट योर फर्स्ट चेन. Create a chain of 4 nodes with values 5, 15, 25 and 35. Then write code to print all the values in the chain. Count how many nodes are in the chain. Find maximum value in the chain.
So, calculate. या इसका बॉयलर प्लेट कोड दे देना भाई. ये वो क्यों नहीं दे रहा है सजेशंस. अरे यार. deleted. Underscore zero underscore ls dot java. Okay, now we got it. कल कर लेना फिर उनका मिस हो जाएगा. हाँ ये मैं भी यही सोच रहा हूँ. लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया ड्राइवर का. ये था ब्यूटी वाला. ब्यूटी ऑफ सबस्ट्रिंग वाला. ये प्रॉब्लम था. सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग्स. ये इकलौता प्रॉब्लम है जो खुद से हो गया था. बाकी सारे में हालत खराब हो गई थी मेरी. समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करूं कुछ भी. ये एक लौता प्रॉब्लम है. इसमें बस एक माइनर सी मिस्टेक थी जो कि सही कराई थी मैंने चैट जीपीटी से. बाकी इट्स ओके. वन डे वी विल बी इन वेरी गुड. कितने नंबर बोले तो. लीड कोड का है ये 1781. So let's say we are creating a class now and put. ये एरर क्यों दे रहा है. It is not public. Class now. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 के अराउंड हो गए. 125 हुए हैं. 125. विल ट्राई आवर बेस्ट. आने वाले 20 डेज के अंदर एटलीस्ट 200 प्रॉब्लम्स तो करनी है. डेटा. ओके इंट डेटा एंड नोड. नेक्स्ट. ओके and then we'll create the construct of public node int data where it will store
this dot data is equals to data, and this dot next is equals to null. So initially, the next pointer will be pointing to null. Okay, so we have this node class created. Now in our main class, that is public class basic and PSVM, mm, we have to create multiple nodes. So let's create first. क्या प्रॉब्लम था वैसे फर्स्ट वाला? We have to create a chain of 4 nodes with values 5, 15 and 25. So let's create first node is equals to new node, and the value it stores is 5. Okay, then we will create second node. Second is equals to new node, and it stores the value 15. Okay, and then node third is equals to new node, that is 25. Node fourth is equals to node new node 35. Hmm. Um, Also we had to upgrade first dot next is equals to second, and second dot next is equals to third, third dot next is equals to fourth equals to cosine equals to fourth, and then fourth dot next तो initially ही null को point कर रहा है, right? Next is equals to null. So ठीक है. Okay, we have connected all the nodes. Now we need to print. Print करने के लिए क्या करेंगे? While next is not equals to null, right? ये गलत है क्या? Node dot next होगा क्या? वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा node के डेटा टाइप का. node current is equals to first, and while current is not equals to null, what we will do? We will print current dot data plus arrow, and then current equals to current dot next, and then print, and let's run this. So I got the basics. Okay, we will first create nodes and then connect the nodes, and then we can iterate over it. ठीक है. Then the interactive exercise का solution क्या है? Node बनाया n1 n2 n3 n4, and then n1 dot next equals to, ठीक है, इनको link किया. Similarly I have linked them, and print all the values. Node current equals to n1, current is not equals to null. System dot out print current dot data plus space. Okay,
If nodes are individual train cars, then the linked list class is like the train conductor who knows where the train starts. Head pointer can add new car to the train, can remove cars from the train, can tell you information about the entire train. Linked list has nodes inside. Okay, then we have to learn about the linked list class. Hmm. Okay, so the linked list class has these methods. Okay, constructor creates an empty linked list. Okay, check if list is empty. Is empty method is used to check if the linked list is empty, and the display method will display all the elements of the linked list. Okay, if head is not equals to null, display list is empty, node current is equals to head, and okay, it will print all the elements of the linked list. Get the size of linked list. This method will return the size of the linked list. Okay, so these methods are built in Java, right? Extend the basic linked list class by adding these methods. Contains return true if value exists in list. Get first returns data of first node or -1 if empty. Get last returns data of the last node or -1 if empty. Okay, I'm getting it. Reversal pattern. Mm. I will continue it tomorrow. I need to understand a little bit more about linked list and then we will explain. So this was it for today, guys. I'm ending the live stream. Thank you so much for joining us. We'll see you tomorrow. Mm,
or should I continue for 20 minutes more? I think I can go on. Let's learn the basics today itself. Okay, so what is a linked list? Okay, why linked list versus arrays? So, okay, linked lists are dynamic in size, no memory waste, but no direct access. For accessing the elements, we have to proceed from the head node to the particular node. हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। कॉलेज वाला के चैनल पे हमारी सी प्लस प्लस और जावा दोनों की डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कंप्लीट सीरीज ऑनगोइंग है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे यार कमेंट्स करके बात यूज़ करना है क्या क्या चीज़ है। इंडिविजुअल आप ये समझो बाइट्स है अभी के लिए, ठीक है। और ये पूरा जो मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, दिस इज़ योर मेमोरी,
ठीक है, दिस इज योर मेमोरी। बहुत बड़ी होती है कंप्यूटर की मेमोरी, 4 बाइट्स तो बहुत ही कम होता है। आप जानते हो मेमोरी तो कितनी ज़्यादा होती है। इवन हमारी आजकल रैम 32 GB, 8 8 GB तो सबसे कम होती है, और जी तो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। गीगाबाइट होता है, 10 में भी कितना, एक तो किलोबाइट ये होता है, फिर मेगाबाइट ये 10 बाइट्स हो गई। एनीवेज, तो ये हमारी मेमोरी है। जब भी मैं करता हूँ, लिखता हूँ इंट एक्स, तो होता क्या है यार, मेरी 4 बाइट्स ऑक्यूपाई हो जाती है। अब आप ये समझो कि ये मेरी मान लो 4 बाइट्स है, 1 2 3 4, ठीक है, देख सकते हो ना कितना, 1 2 3 4, 4 बाइट्स मैंने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया अपनी। अब एरे में क्या होता है, अगर मान लो मैं लिखता हूँ इंट आर इक्वल टू न्यू इंट 10 की जगह यार इसको थोड़ा सा रीजनेबल बना देते हैं, 4 लिख देते हैं, एक बार के लिए समझ लो। 4 साइज का एरे यानी कि 4 इंटीजर स्टोर करने की लोकेशंस क्रिएट हो गई मेमोरी में। लेकिन एरे के अंदर वो सारी मेमोरीज एक साथ क्रिएट होती है। कहने का मतलब कि जैसे 4 इंट के डब्बे हैं ना, तो देखो ऐसा होगा कि देखो एक ये गेम लिया, फिर अगला वो साथ में ही ले लेता है एक, देखो 4 बाइट्स और, फिर अपने एरे के थर्ड एलिमेंट के लिए यार लेकिन मेमोरी में वो यार जब हम मान लो, ठीक है, या ऑक्यूपाइड है जगह जो बहुत बड़ी हो और खाली हो, ताकि वहीं के वहीं मेरा एरे बन सके, ठीक है। तो यार ये इसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन ये एक एडवांटेज भी होता है इसका, कि आप सबको यार ये पता होना चाहिए। अब आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ चुके हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ कि मान लो मैंने एरे 4 एरे का बना दिया, ठीक है, 4 साइज का, तो इसमें अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट गेट करना होता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है, विच इज फैक्ट होकर रखे है 0 को ऑर्डर ऑफ 1 यार किसी चीज में कुछ एक देते हैं, कुछ ये तो 5 साइज का एरे था। अगर मान लो 5000 साइज का हमारी ग्रुप का जाएगा साइज नहीं वेस्ट हो रहा है। अगर मान लो एग्जिस्टिंगली हमारे, चलो पहले एक टाइप था पढ़ने न्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अगर कोई ऐसा मेरे को वो मिल पाए डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मान लो मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है 5, ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा, फिर दूसरा एलिमेंट है 1, फिर तीसरा एलिमेंट है 10, चौथा एलिमेंट है 4, पांचवा एलिमेंट है 2, मैं ऐसे 5 साइज का एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ जो कि एरे नहीं है। अब ये इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी हो कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे लिंक लिस्ट में, क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस एक साथ नहीं होता। अगर ये एक एरे होता तो इन सबका एड्रेस एक साथ होता, मतलब कंटिन्यूस मेमोरी में होते हैं। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि हो सकता है क्या होता ही है, मेमोरी अगर मैं बनाऊँ मान लो, ठीक है, वापस से अगर हम अपनी यहाँ पे अच्छी सी यार मेमोरी बनाने की कोशिश करते हैं यार, मान लो ये हमारी यार मेमोरी है, और मैं चाहता हूँ यार ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बन जाए कि पहला एलिमेंट, पर आप बोलोगे पर ये आपस में किसी एक रिश्ते से, ऐसा होता नहीं है, अजीब सा नाम होता है, बहुत ही अजीब नाम होता है। मैं थोड़ा सा अच्छा नाम दे रहा हूँ, फिर भी बना दो अपना, जिसका आप नाम रख देते हैं यार लिंक लिस्ट। सिमिलरली ये जो हम यूजर डिफाइंड पूरा नोड बनाएंगे, तो इसमें भी यहाँ पे हम इसकी जो वो वैल्यू होगी वो इन जनरल नल होती है, बट यहाँ पे हम नल दे देंगे, यानी कि किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब पॉइंट करने का मतलब पहले एलिमेंट के, तो मैं अगर मेरे भी पूरा लिंक लिस्ट का पहले वाले को हम बोलते हैं यार अपना हेड, दिस इज नोन एज द हेड ऑफ लिंक लिस्ट, और मैं अपने लास्ट मेंबर को यूजुअली बोलता हूँ अपना टेल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो जो पहला एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं हेड, लास्ट वाले को मैं बोलता हूँ टेल। अगर मेरे पास हेड पड़ा है, मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है। अब सवाल यार ये आता है कि जैसे मुझे ये तो पता लग गया कि ये डेटा टाइप का है, ये किस डेटा टाइप का है, इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो कमाल की बात यह है कि इसका डेटा टाइप नोड ही होगा जावा के अंदर, ठीक है। सी प्लस प्लस थोड़ा सा पॉइंटर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा नोड डेटा टाइप ही होगा। अब मैं इसका आपको ना एक बार मतलब समझाता हूँ कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा याद है, एक बार हम पूर्ण करने में आ जाते हैं और थोड़ा क्लासेस को देखते हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, हमने लास्ट टाइम बनाया था, ये देखो स्टूडेंट क्लास, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, ये स्ट्रिंग नेम सारी की सारी चीज़ें, फिर हमने कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर बनाया था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने आपसे ये बोला था कि मैं एक स्टूडेंट बना देता हूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले तो एक नया पैकेज बना दो अपना, जिसका आप नाम रख देते हैं यार लिंक लिस्ट, ठीक है, बन गया पैकेज। इसके अंदर आप एक काम करें, नई फाइल बना लो जिसका नाम रख देते हैं बेसिक्स, ठीक है, एंड बेसिक्स एल डॉट जावा। आ जाते हैं यार यहाँ पे, मैंने एक नया डेटा टाइप बना दिया बिल्कुल, और कुछ कुछ चीज़ें करते हैं PSVM, और यहाँ पे एक डेटा टाइप बना के दिखाता हूँ मैं आपको, जिसका मैं नाम रख देता हूँ पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक क्लास नोड। मैं ऐसा डेटा टाइप करता हूँ जिसमें 2 प्रॉपर्टीज हो। पहली प्रॉपर्टी इंट डेटा, मैं इसको डेटा बोल रहा हूँ क्यों, इसका मतलब जो भी इस नोड का एक्चुअली में डेटा है, जैसे यहाँ पे आओ तो इसका 5 है डेटा, इस नोड का 3 है, इसका 9 है, इसका 8 है, 16 है, तो इसको मेरे को इंटीजर में स्टोर करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इंट डेटा, अब दूसरी चीज़ बनाने से पहले अभी के लिए मैं सिर्फ इंट डेटा रखता हूँ, यहाँ पे एक भी रख सकते हैं। मान लो मैं मेन में आके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऐसे बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट, सबसे पहले अपना डेटा टाइप का नाम लिखो, नोड लिखा, फिर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, नोड एक्स लिख देता हूँ, जैसे इंट एक्स होता है इज इक्वल टू न्यू नोड, ऐसे करता था मैं, ठीक है। और हम कंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं, बाय द वे बनाएंगे वो भी चीज़ें सारी की सारी इस क्लास के अंदर। बट यहाँ देखिए ये बन गया। अब अगर मैं डायरेक्टली, मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ, सबसे पहले तो अगर मैं एक्स डॉट डेटा प्रिंट करूँ तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो कि 0 है, देखो 0 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक्स प्रिंट करता था तो कुछ अजीब गरीब चीज़ आती थी, देखो रन करो, ये देखो क्या आ गया है। सबसे पहले तो हमारे पैकेज का नाम आ गया, फिर हमारी फाइल का नाम आ गया बेसिक्स एल, फिर ये अजीब सी चीज़ आ गई डॉलर नोड एट द रेट समथिंग समथिंग, ठीक है। अगर मैं वापस रन करूँगा तो थोड़ी सी होता क्या है, ले वाले का यस यस के अंदर आ सकता है। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ नोड नेक्स्ट। नेक्स्ट का डिनोट कर रहा है कि जो मेरा एक नोड है जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज है, खुद का डेटा और अगले का नेक्स्ट, अगले का एड्रेस भी स्टोर हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, अगर मैं कुछ प्रिंट करा के देखूँ यहाँ पे एक्स डॉट नेक्स्ट अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं, नल आ जाएगा आंसर, ठीक है, नल, क्योंकि अभी तक कोई हमने एड्रेस यहाँ पे सेट नहीं कर रखा है, ठीक है। सी प्लस प्लस में अगर एड्रेस अब एक ब्रेक्स बना दिया, और इनफैक्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। आप सब जानते हो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऐसा, ठीक है, ये चीज़ नहीं पढ़ रही तो प्लीज पढ़ के आओ। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दे देते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले की वैल्यू 5 थी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे 5 नोट बना देता हूँ, ABCDE नाम, पहला नोट दे दिया 5 का, फिर मैं ये देखो 5 बार कॉपी पेस्ट करते हैं, अगला नोट बना देते हैं B, अगला नोट बना देते हैं C, अगले में बार बार ये अजीब सी चीज़ें हटाना चाहते हो, कई बार परेशानी होती है, तो डिसेबल कर दिया करो, डिसेबल हिंट्स फॉर मेथड नोट, ठीक है, या डिसेबल हिंट्स, ठीक है, समझ जाएगा, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। अब ये देखिए मैंने 5 नोट्स तो बना दिए, लेकिन ये आपस में लिंक्ड नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मेरे को इसकी और चीज़ नेक्स्ट 5 नल को नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कुछ हमें याद है कि इसी की बात हो रही है, इसका आंसर। अब एक काम करते हैं, हम कल बी प्रिंट कर रहा हूँ 4F, फिर हमारा ए 4, लेकिन पहला और चौथा अलग है, ये देखो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, क्योंकि जो ये चीज़ है मेरी, जो मेरे यहाँ से उठाते हैं ना, ये तो पैकेज और क्लास का नाम है, तो ये देखो कमांड सी, ये इधर यार है, फिर आप देखोगे कमांड सी, यहाँ से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ यार थोड़ा सा बना के रखना,
बीच में छोड़ के मत जाना, ये ऐसे टॉपिक यार बच्चे छोड़ देते हैं और यहाँ के बाद कोडिंग छोड़ देते हैं करना। जावा में तो आसान है, जो बी की लोकेशन है, और जब मैंने ए डॉट नेक्स्ट किया, क्योंकि ए डॉट नेक्स्ट का सिंपल मतलब था कि बी का एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर दो, इसको एक बार के लिए यार आप एड्रेस ही समझो यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने ए का नेक्स्ट का एड्रेस प्रिंट किया और बी का एड्रेस, वो बिल्कुल सेम है, क्यों? क्योंकि मैंने ए के नेक्स्ट के अंदर बी का एड्रेस डाल दिया था। तो इन ये सब हमने देख लिया, ये सामने प्रिंट करके दिखाऊँ, तो आ गया 3 आ गया आंसर, ठीक है। अभी ये सीन बन गया कि कुछ ऐसा सीन बन गया कि 5 और 3 आपस में अब कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो, जब मैं अगर बी डॉट डेटा नहीं, मेरे को बी का डेटा प्रिंट करना है यूजिंग ए, तो देखो मैं कैसे करूँगा। अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये देखो बी, फिर इसके बाद अगर मैं करता हूँ डॉट डेटा, तो देखना 3 प्रिंट होगा, देखो 3 प्रिंट हो गया। जबकि अगर सिर्फ ए डॉट डेटा प्रिंट करो तो 5 प्रिंट हो जाएगा, तो देखो 5 प्रिंट हो गया। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो नोड क्लास बनाई है इसका मीनिंग क्या है, इस कनेक्शन हम बना कैसे रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको पूरी लिंक लिस्ट कनेक्ट करनी है आपस में यार, तो आप ये काम करोगे। अब आप चाहते हो कि ये जो सी है ये बी से कनेक्टेड हो, तो आप लिखोगे बी के नेक्स्ट में यार सी को डाल दो, फिर आप लिखोगे सी के नेक्स्ट में यार डी को डाल दो, और डी के नेक्स्ट में यार आप डाल दो ई को। तो ये करने से सारी लिंक लिस्ट अब आपस में क्या हो चुकी है यार, मेरी कनेक्ट हो चुकी है, और एक लिंक लिस्ट बन चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, जैसे मैंने बी डॉट नेक्स्ट सी किया तो क्या हुआ, इसका मान लो हमने ये नोट्स बना रखे हैं 5, अब इसके आगे एड्रेस भी होगा यार, वो मैं बना क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एड्रेस में स्टोर कर रहा हूँ मैं। देखो लिंक लिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है कि यहाँ पे इंट नहीं बन रहा, सिर्फ एक नोड बन रहा है जो कि एक तो इंटीजर वैल्यू ले रहा है और अगले वाले का एड्रेस भी स्टोर कर रहा है, तो मेमोरी यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा खर्च हो रही है एक्स्ट्रा, ये ड्रॉबैक है एक, ठीक है। लेकिन उस मदद से होता क्या है कि ऑल ऑफ दीस थिंग्स कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर, कि 5 मेरा यहाँ स्टोर हो गया मेमोरी में, फिर यहाँ पे मेरा 3 स्टोर हो गया, यहाँ पे मेरा 6 स्टोर हो गया, यहाँ पे 8 स्टोर हो गया, यहाँ पे 9 स्टोर हो गया, क्योंकि एड्रेस आपस में लिंक्ड है, तो जरूरी नहीं है कि कितने भी स्टोर हो। अच्छा, इसमें बेनिफिट पता है क्या है, अगर मेरे को अब इंसर्शन करनी हुई, अगर मेरे को अब इंसर्शन करनी हुई, ठीक है, तो सिंपली यार मैं बिना आगे के एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट करे, क्योंकि आरे में क्या पंगा होता था कि सारे एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ता था मेरे को, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। मान लेते हैं इंसर्शन के अंदर मेरे को एक नोड, ये मैं इंडेक्स दे देता हूँ, एक इंग्लिश के इंडेक्स 0 1 2 3 4, यूजुअली हर जगह इंडेक्स जो होते हैं वो 0 से शुरू करते हैं, ये लिंक टेस्ट के टेक्निकली इंडेक्स है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने सेकंड इंडेक्स पे एक नया नोड इंसर्ट करूँ 10 डेटा के साथ, ठीक है। तो ये बड़े आराम से हो जाएगा यार। ये कैसे, पहले जब हम यहाँ पे सिंपल सेकंड पे पढ़ा 8, उस 10 के अंदर भी 6 का एड्रेस डाल दिया। अब देखो 3 के अंदर भी 6 का एड्रेस है, 10 के अंदर भी 6 का एड्रेस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस कनेक्शन को तोड़ देंगे यार, इस कनेक्शन को तोड़ देंगे, मतलब 3 के अंदर 6 का एड्रेस अब नहीं डालेंगे, अब हम 3 के अंदर डाल देंगे 10 का एड्रेस। तो आप देख सकते हो लिंकेज बन गई, ये लो ये ऐसे दिख रही है, बट इन 3 वर्ड की जगह अंदर वैसे पहले करना होता है, कहते हैं स्मॉल में होता है, आई एम सो सॉरी। हम एक क्लास बनाएंगे नोड नाम से, बना रखी है यार, ठीक है। सिंपल मीनिंग है कि पहले बी पे जाओ, बी नोड पे उसका डेटा उठाओ, ये नहीं चाहता मैं, ये अलाउड ही नहीं है। तो हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं ए डॉट नेक्स्ट जो कि बी है डॉट डेटा। अब अगर मैं ये करूँ तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी हमारी, देखो सेम आएगा बिल्कुल 5 3 9 16। सिमिलरली एक बात बताओ, मेरे को अलाउड नहीं है कि मैं सी डॉट डेटा लिखूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी क्या है, सी है मेरा बी डॉट नेक्स्ट, बी का नेक्स्ट सी है, पर मेरे को ये भी अलाउड नहीं है बी को यूज़ करना। तो बी क्या है, बी है मेरा ए डॉट नेक्स्ट। तो अगर मैं लिखूँ ए डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, तो इसका मीनिंग होगा सी डॉट डेटा। समझने इस बात को, ए डॉट नेक्स्ट है मेरा बी, फिर ये पूरा क्या कहते हैं बी डॉट नेक्स्ट है मेरा सी, और सी डॉट डेटा है सी का डेटा। सिमिलरली अगले में मैं क्या लिखूंगा यार, अगला जो मेरा डी है वो क्या है, ए डॉट नेक्स्ट यानी कि बी डॉट नेक्स्ट यानी कि सी डॉट नेक्स्ट यानी कि डी, उसका डेटा। सिमिलरली लास्ट वाले में मैं बहुत बार लिखूंगा ए डॉट नेक्स्ट यानी कि बी डॉट नेक्स्ट यानी कि सी डॉट नेक्स्ट यानी कि डी डॉट नेक्स्ट यानी कि ई, और उसका डेटा प्रिंट, ठीक है। तो अगर मैं ये काम करता हूँ तो भी सेम आंसर आएगा ये, ठीक है। बार बार ये डॉट ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ डेफिनेटली, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ पता लग गई। अच्छा, तो अब मैं यार ये नहीं कर सकता कि फॉर लूप लगा लूँ, बार बार नेक्स्ट करते जाऊँ और आंसर आ जाएगा मेरा। क्या मतलब, इधर देखिए, डिस्प्ले करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मान लो मेरे पास ये नोड्स है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है 5, मैंने लिखा है यहाँ पे 3, फिर मैंने 9 लिखा है, फिर मैंने लिखा है यार 8, और फिर मैंने लिखा है 16, और मैंने कनेक्ट कर दिया है। और मुझे पता है यार ये इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, इसको डी बोल रहा हूँ, इसको अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया नोड बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा नोड टेम्प, जो एक बारी के लिए यहाँ पे मेरा पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। मैं नाम रखूंगा नोड टेम्प, मैं नाम रखूंगा नोड टेम्प जो कि ए के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कोड में नोड टेम्प, इसको मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा इज इक्वल टू ए। यार ये करने का मीनिंग पता है क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक नया नोड क्रिएट कर रहा हूँ ना। अगर मैं ये लिखता कि नोड टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, जब न्यू कीवर्ड लिख दो और यहाँ के अंदर मैं कुछ भी दे दूँ या कुछ भी ना भी दूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर मैं लगाऊँ, तो इसका मतलब होता है कि एक नया मेरा बन रहा है टेम्प, ठीक है। फिर अगर मैं कनेक्ट करूँ उसको ना, अगर मैं लिखता हूँ नोड टेम्प इज इक्वल टू ए, या इन जनरल अगर मैं यहाँ गलती से ये लिख दूँ नोड बी, या अगर मैं सीधा लिख दूँ बी इज इक्वल टू ए, फिर नेक्स्ट नोड टेम्प इज इक्वल टू ए। अगेन इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि मैं एक नया नोड बना रहा हूँ, सॉरी, इस लाइन का मतलब है कि मैं बस एक टेम्प देखो कर देते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एंड इसको हम, इसका पहली लाइन चलिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टेम्प डेटा प्लस गैप, ठीक है। तो मान लो यार ये हमारा आउटपुट है, ऐसा काम हमारा हो रहा है। पहली लाइन में क्या प्रिंट होगा, टेम्प जहाँ पे है अभी उसका डेटा है 5, प्रिंट कर दो 5, एक स्पेस भी प्रिंट कर दो, ठीक है, क्योंकि स्पेस है। अब अगली लाइन मेन हमारी हाईलाइट ये है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ये क्या है भला यार, ये कोई लाइन हुई, इसका मीनिंग क्या हुआ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट का मीनिंग है सबसे पहले टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, ये ए है, ये टेम्प है, ये बी है, ए डॉट नेक्स्ट ये है, ठीक है। बी इज बेसिकली व्हाट, ए डॉट नेक्स्ट, ये हमने खुद से किया था कि ए डॉट नेक्स्ट को मैंने भी बना दिया था। तो टेम्प भी अगर ए के बराबर है अभी, तो टेम्प का नेक्स्ट अभी के लिए ये है, यानी कि बी पूरा, टेम्प का नेक्स्ट 3 नहीं है। टेम्प डॉट नेक्स्ट का मीनिंग है बी का कंप्लीट एड्रेस, यानी कि कंप्लीट बी, नॉट जस्ट बी की वैल्यू। अब मैंने क्या बोला, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसका सिंपल मीनिंग है टेम्प इज इक्वल, मतलब ये टेम्प इज इक्वल, आगे बढ़ गया 8 प्रिंट हो गया, एक पूरी लिंक फंक्शन दे रखा हो, आपको बस बताया जाएगा, उसके बाद होता है मेन यहाँ पे हमारी यार टेल होती है। यहाँ पे इस ये बनाया इधर देखो, एक बार ऑफ नोट वन, हमें यहाँ पे एक बाई लूप को मेंबर को इसमें चेंज नहीं करूँगा लूप, आप कह सकते हैं आगे बढ़ रिकॉर्ड
फंक्शन आपने पढ़ा स्टैटिक और ये फंक्शन बस मैं ये लिखूंगा और हम अपना आउटपुट देखते हैं। सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, ए का नेक्स्ट सभी के लिए बी है एंड सो ऑन। तो देखो पहला क्या ए नल के बराबर है, नहीं है, स्पेस आ गया, ठीक है, डॉट नेक्स्ट हेड इधर आ गया, फिर 3 प्रिंट हो गया, 9 प्रिंट हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। So we were able ठीक to है, अब ये learn दो लाइनें these लिखनी है और things आपको एक बेस केस without लिखना है। बेस wasting केस हमारा क्या रहने वाला है यार, our जब मेरा हेड नल हो गया, अगर इफ हेड इक्वल टू नल, उसके बाद प्रिंट करो हेड डॉट वाइल प्लस दिस चीज़ है ना, इसको करते हैं कॉपी। मेरे को इसका यहाँ पे ये प्रिंट करना है, सीधी वाली लिस्ट प्रिंट करनी है, ठीक है। अगर मेरे को सीधी वाली, ठीक है, डेटा लिख रहा हूँ मैं एक बार के लिए समझना, ठीक है। हमने इस 5 वाले को पहले कॉल लगाया, समझ लो, समझ बस काम ओवर। अब मैं इसकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। कॉल किसने लगाया था, इस फंक्शन ने जिसके के दिखाया। सेम तरीके से मैं लेंथ निकाल सकता हूँ लिस्ट की, ऑफ कोर्स दैट थिंग आप काउंट को ऐड कर सकते हो, काउंट प्लस एरे लिस्ट नाम की मैंने क्लास बना दी थी, ठीक है। तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी बन जाए, 4 फिर 5 आ जाए आगे, जैसे एरे लिस्ट मैंने बनाई थी, एरे होता है, एरे लिस्ट में ऐड करते रहते हैं ना पीछे, वैसे ही मैं लिंक लिस्ट आता हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे एरे आ गया हमारे पास, ये थी लिंक लिस्ट एज अ नॉन परमिटिव डेटा टाइप, जैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं ना, ऐसे मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि यार देखो इस केस में तो मेरे को ये करना पड़ रहा है बार बार कि अपने आप से मैंने नोट्स बनाए, खुद से मैंने उनको कनेक्ट किया और मान लिया हमने कि ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, दिस इज फाइन। बट मैं ये चाहता हूँ, एक बार इसको थोड़ा इधर आ जाते हैं जावा क्लास और लिख देते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, डॉट जावा। दूसरा इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इसका। अब मैं कुछ ऐसा चाह रहा था यार, इसमें थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको कि PSVM में जब मैं लिखूँ अंदर जाके, यहाँ पे जब मैं ये लिखता था ना इंट ऐसे ARR इज इक्वल टू न्यू इंट 5 जैसे ऐसे, तो ऐसे टाइप की मैं लिंक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं सीधा सीधा ये बना दूँ लिंक लिस्ट, जैसे हमारे लिस्ट में करते हैं ना, ये देखो वैसे तो इंटरनल लिंक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये देखो ऐसे, लेकिन हम इसको रखेंगे नहीं अभी। जावा के अंदर इंटरनल लिंक लिस्ट होती है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। मैं खुद से एक लिंक लिस्ट बनाऊँ जिसका मैं ऐसे नाम रख देता हूँ, स्मॉल में रख देते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। और फिर इसका मैं एक अपनी खुद की लिस्ट बनाऊँ, जैसे कि मैं कुछ बनाऊँ न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, जैसे मैं नोट बना रहा था। और ये करते ही जब मैंने ये बना दी ना, मैं चाहता हूँ मैं ऐसे अपनी लिंक लिस्ट की शुरुआत करूँ कि अभी एम्प्टी है मेरी लिस्ट, और अगर मैं लिखूँ NL, जो इस लिंक लिस्ट का मैंने नाम दिया है, NL डॉट ऐड नाम का एक फंक्शन बना दूँ कि भाई को NL डॉट ऐड वापस मैं लिंक लिस्ट आता हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास नोड, ये तो मुझे बनानी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो, इंट डेटा और नोड नेक्स्ट, ठीक है, ये मेरे को करना पड़ेगा। इसमें हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं यार, नोड इंट डेटा, तो अपनी पब्लिक दिया मेरा, क्योंकि इस नाम की मैंने एक क्लास बना दी। इस क्लास में मैं ऐसा इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं सबसे पहले। तो इंप्लीमेंटेशन कहाँ है यार, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। अभी मैं सिंगल लिंक लिस्ट की बात करूँगा, वापस से इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है, स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं एक। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ अपनी लिंक लिस्ट में, हर लिंक लिस्ट में होता है क्या, मान लो ये लिंक लिस्ट है 1 3 5 4 2 3 या 7 ले लो, अलग नंबर ले लो, ये भी ले सकते हैं वैसे तो, सेम नंबर भी तो हो सकते हैं यार। ऐसी लिंक लिस्ट मेरी बने एक, ठीक है। हमेशा ये मेरा हेड होता है, तो लिंक लिस्ट में कुछ चीज़ें होती है, एक होता है हेड, ये होता है ऑफ कोर्स मेरा एक टेल, और ये कनेक्टेड होता है टेल मेरा हमेशा नल से। तो हम अब ऐसी लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें हम एक हेड मेंटेन करें हमेशा, एक टेल मेंटेन करें हमेशा, और अपने खुद के फंक्शंस बनाए। जैसे कि ये लिंक लिस्ट मेरी बनी पड़ी है, इसके बाद अगर मैं लिखूँ LL डॉट ऐड 7, तो क्या हो कि यहाँ पे 7 ऐड हो जाए और वो नल को पॉइंट करे और अपनी टेल भी मेरी फिर 7 पे आ जाए, समझ लो, ऐसा टाइप का कुछ हमें करना है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स एक मेरे को हेड रखना पड़ेगा, तो इस लिंक लिस्ट का एक मेंबर रहने वाला यार मेरा नोड हेड, ठीक है, ये इस क्लास में मैं रख रहा हूँ, और हेड में इनिशियलाइज कर दूंगा मैं नल से, ठीक है, हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय द वे। फिर मैं रखूंगा नोड टेल, इसको भी मैं एक बार के लिए नल से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है। हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, जैसे कि साइज, मान लो मैंने ये लिंक लिस्ट बना दी 4 5, मैं डायरेक्टली प्रिंट करना चाह रहा हूँ LL डॉट साइज मेथड से, जैसे एरे लिस्ट में होता है, मैं ये लिखूँ और मेरा काम हो जाए, मैं ये भी चाहता हूँ करना। तो ये सारी चीज़ें बनाएंगे, पर एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहली जो हम यहाँ पे चीज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, हम पहला फंक्शन बना सकते हैं। अब ये इस क्लास के अंदर का फंक्शन होगा, जैसे डिस्प्ले फंक्शन बनाया था वैसे इसमें, और उस फंक्शन का नाम हो सकता है हमारा इंसर्ट एट एंड। इंसर्ट एट एंड मतलब मेरे पास अगर कोई ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, मैं ये चाहता हूँ ये फंक्शन बनाऊँ कि LL मैं ऐसे करूँ, LL और फंक्शन का नाम रखूँ मैं इंसर्ट एट एंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर दूँ एक। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो जाए कि जो मेरी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट थी वो कुछ ऐसी बन जाए, एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट मेरी कुछ ऐसी बन जाए, ठीक है, कि अब यहाँ पे लास्ट में 7 ऐड हो गया, तो ये मेरी टेल बन जाएगी ऑफ कोर्स, और ये नल को पॉइंट करेगा। टेल हमेशा होता है जो लास्ट वाली चीज़, ठीक है, जैसे मैंने ये किया तो ये आ जाए। तो ऐसे टाइप का फंक्शन मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मेरे को इन जनरल भी लिंक लिस्ट दे रखी है और मेरे को टेल दे रखी है लिंक लिस्ट की, देखना फायदा। तो बहुत ही सिंपल आंसर होगा यार इसका। मान लो ये मेरी टेल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मेरे को लास्ट में 7 डालना है, इतना बेहद सिंपल काम होगा ये। देखो यहाँ पे अगर मैं सेम टू सेम लिखूँ, मान लो ये सीन था मेरा, मुझे एट दी एंड 7 डालनी है, तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, एक नया नोड बनाऊंगा सबसे पहले जिसमें 7 डेटा डालूंगा। जो मेरी टेल थी पहले वो नल को पॉइंट कर रही थी, मैं टेल को पॉइंट करा दूंगा 7 को, दैट्स इट। और इन जनरल मैं एक और काम करूंगा, मैं टेल इज इक्वल टू जो भी नया मैंने नोड बनाया था उस पर पॉइंट करा दूंगा अपनी टेल को, ताकि ये मेरा टेल हो। एंड नॉर्मली ये नल को ही पॉइंट करेगा क्योंकि हमने एक नया नोड बनाया था, और डिफॉल्ट केस में वो नल को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप की मैं फंक्शन बना सकता हूँ इंसर्ट एट एंड। अब ऑब्वियसली यार देखो वो मैं काम यहाँ से भी कर सकता था, अपने इसमें जाते हैं, अगर मैं बेसिक्स LL पे जाऊँ तो इधर भी मैं फंक्शन बना सकता हूँ। जैसे ये मेरी लिंक लिस्ट ऑलरेडी मैंने खुद से बना रखी है ना, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना सकता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंसर्ट एट एंड, उसके अंदर मैं नोड दे दूंगा, आगे तक जाते रहूंगा, जैसी टेल पे आ जाऊंगा मैं फंक्शन इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वो काम हम कर सकते हैं डेफिनेटली, वो करेंगे इनफैक्ट, उसको क्वेश्चन रखेंगे। बट अभी के लिए मेरे पास एक टेल आ गई, मेरे पास यहाँ पे एक हेड आ गया, बहुत बढ़िया यार। अब मेरे को और क्या प्रॉपर्टी चाहिए थी, एक साइज चाहिए था, साइज को हम बाद में रखते हैं एक बार के लिए, बस ये देखते हैं कि हेड है और टेल है। अब यहाँ पे नाम फंक्शन बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले इंसर्शन फंक्शन ही लगेगा हमारा। तो एक फंक्शन बनाते हैं हम यहाँ पे, और फंक्शन का हम नाम रख देते हैं वॉइड वॉइड इंसर्ट एट एंड, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें ऐसे इंसर्ट एट एंड एक डेटा मिलेगा, हमें वही इंसर्ट करना होगा, इंट डेटा नाम से हम ले सकते हैं इसको, ठीक है।
को भी वैल्यू मिलेगी, इंट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरे को इंसर्ट करनी है एंड में। तो यहाँ पे सिंपल मैं कुछ कुछ चीज़ें चेक करूँगा। सबसे पहले इंसर्ट का तरीका मैंने क्या बताया था, जैसे इधर आओ वापस से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। हम इधर है, ये हमारी लिस्ट है। अगर हमारे पास कोई टेल है, पॉइंट नंबर 1, अगर हमारे पास कोई टेल यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई टेल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या करूँ, सबसे पहले तो हमें एक नया नोड बनाना है, उसके अंदर ये वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं एक नया नोड बनाऊंगा, नोड टेम्प रख सकते हैं, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू नोड, और उसके अंदर मैं ये वैल्यू डाल दूँ, बन गया एक नया नोड, बहुत बढ़िया। फिर मैं क्या करूँगा, जो भाई एग्जिस्टिंग टेल है